recording. This is the passage. Actually, this passage I had done before, but a little bit, some changes were done by Indrup, and he wanted me to do it again with the students to see if it is good now. Okay. Let us see. The first set of questions is paragraph headings. First set of questions is paragraph headings. Okay, just, these corrections also have to be pointed out, whatever I have done. Okay, first set of questions is paragraph headings, and the second set of questions is match the correct sentence endings, and third set of questions is true, false, not given. Okay, so paragraph headings we'll do first. How do we do the paragraph headings? The way I tell all my students is that first calculate how much time you have in the exam for these questions. So these are only 5 questions here. 5 questions here would mean 7.5 minutes. Okay. So out of those 7.5 minutes, what you have to do is, and don't worry, it will take you a little more time, but you will be saving time in the other questions. Believe me. Okay. So don't panic. And for these 7 questions, what you will do first, you will strike out the example if it is given. So यहाँ पे 10th option example है और E paragraph है. तो E paragraph को ना अपनी पेंसिल से हल्का सा क्रॉस कर लेना, ऐसे हल्का सा लाइन डाल देना, ताकि एग्जाम में जब आप E पैराग्राफ F पैराग्राफ पे पहुंचो आप E ना पढ़ने लग जाओ फॉर द हेडिंग. ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. So these things are very important, because many a times I have wasted time doing things like this. Okay, तो एक इसको लाइन डाल दो और एक 10th को क्रॉस कर दो, और बाकी जितनी आपके पास 9 ऑप्शंस हैं, all these 9 options you have to read and translate in your language nicely, and then go to the paragraphs. Okay, so first is Western countries provide essential assistance. Western countries zaruri help provide करती है. Different levels of development within Asia. Asia के अंदर different अलग-अलग levels development के. Factors determining the development of space in Asia. तो एशिया में जो development of space है उसको जो factors determine करते हैं, ठीक है? An ancient invention and its current application. एक ancient means प्राचीन invention, और उसकी अभी जो application है, अभी उसको कैसे apply किया जा रहा है. Military aspects of satellites. Satellites के military aspects. Rocket application in ancient China. Ancient China means प्राचीन China में rocket application. The impact and future scope of space-based technologies. Space-based technology का impact और इनका future scope. Non-technology factors count. Non-technology के जो factors है वो count करते हैं, मैंने रखते हैं. इसका ये मतलब है, count का मतलब गिनना नहीं है यहाँ पे. Competitive edge gained by more economically feasible satellite. तो ज्यादा इकोनॉमिकली फिजिबल जो सैटेलाइट है उससे जो कॉम्पिटिटिव एज गेन हुआ है वो. ठीक है, नाउ ये 10th हमने नहीं पढ़ना. नाउ वील गो टू ए पैराग्राफ एंड सी इस पे कौन सा हेडिंग जच रहा है. ओके, रॉकेट टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड कंसिडरेबली सिंस द डेज ऑफ फायर एरो बैम्बू पोल्स फिल्ड विद गन पाउडर, फर्स्ट यूज्ड इन चाइना अराउंड 500 BC and during the Song dynasty to repel Mongol invaders at the Battle of Kaifeng. These ancient rockets stand in stark contrast to the present-day Chinese rocket launch vehicles called the Long March, intended to place a Chinese astronaut in space by 2005 and perhaps to achieve a Chinese moon landing by the end of the decade. अब ये end of the decade आ गया कि अभी का टाइम आ गया, और ये प्राचीन की बात होगी चाइना की. तो कौन सा हेडिंग जच रहा है आपको? Ancient invention and its current application. Yes, Fourth one. Fourth one. Okay. Now we go to B paragraph. Okay. The space age has had dramatic effects worldwide, and with direct developments in space technology influencing telecommunications, meteorological forecasting, earth resource and environmental monitoring, and disaster mitigation. New and innovative uses for satellite are constantly being explored with potential revolutionary effects, such as in the field of health and telemedicine, distance education, crime prevention. ये सारे are currently being explored
constantly being explored with potential means आने वाले revolutionary effects. अब देखो कौन सा heading जच रहा है. 6th. कौन सा जच रहा है आपको? The impact and future scope of हाँ, Yes, Sixth. ma'am, वही. the impact Potential and is on future one. scope 7th वाला. of 7. space-based technologies. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. उसके बाद C paragraph पे जाओ. Asian nations have been particularly eager to embrace these developments. In the last decade, there has been a dramatic growth in the space activities in Asia, both in the utilization of space-based services and the production of satellites and launchers. This rapid expansion has led many commentators and analysts to predict that Asia will become a world space power. Space in Asia is very much influenced by the competitive commercial space sector, the emergence of low-cost mini satellites, and the globalization of industrial and financial markets. It is not evident how Asian space will develop in the coming decades in the face of these trends. Moreover, in the development of this technology, many non-technical factors such as economics, politics, culture, and history interact and play important roles, which in turn might limit space technology in Asia. It is, however, important to understand and assess the factors and forces that shape Asian space activities and developments in determining its possible consequences for the region. Okay. कौन से heading जच रहा है? बताओ. 3rd वाला. Factor determining the development of space Very in good. Asia. ठीक है. Okay. Next, ये answer. Factors determining the development of space in Asia. Now we go to paragraph D. Okay. At present, 3 Asian nations, Japan, China, and India, have comprehensive end-to-end space capabilities and possess a complete space infrastructure. Space technology, satellite manufacturing, rockets, and spaceports. Japan is regarded as the dominant space power in Asia, and its record of successes and quality of technologies are equal to those of the West. यहाँ पे जापान की बात हुई है, आगे साउथ कोरिया की बात हुई है, और उसके आगे एक और जगह की बात हुई है. ओके. अब इनसे आपको पूरा ये पढ़ना पड़ेगा. It will take you a minute or maybe more than a minute, but you will get the answer here. बताओ कौन सा जज रहा है? Second वाला. Different level of development within Asia. हाँ, तो हर जगह में level of development different है. Within Asia, different levels of development. So second is the answer to that. ठीक है? And paragraph अब हमने E नहीं करना. E आपने cross out करा हुआ है, तो F paragraph पे जाओ. In recent years, there have been fundamental changes in the way satellites are designed and built to drastically reduce costs. The emergence of small satellites and their quick adoption by Asian countries as a way to develop low-cost satellite technology and rapidly establish a space capability has given these countries the possibility to shorten their learning curve by a decade or more. The global increase of technology transfer mechanisms and use of readily available commercial technology to replace costly space and military standard components may very well result in a highly competitive Asian satellite manufacturing industry. बताओ कौन सा जच रहा है आपको आंसर? 9th वाला. Competitive edge gained by more economically feasible satellite. Yes, ma'am. यही वाला है. 9th is the answer. यही वाला. ठीक है. अच्छा, अब आपको ना इन क्वेश्चंस में 7.5 मिनट से टोटल अगर 1 या 2 मिनट ज्यादा भी लग गए हैं ना, तो पैनिक मत करना. कुछ आंसर्स आपको यहाँ 1.5 मिनट से कम पे मिलेंगे. ओके. अब ये वाला जो है, मैच द सेंटेंस एंडिंग्स. Experts believe that Asia will become the world space power. अब इसको आपने कंप्लीट करना है यहाँ से, और आपने एशिया और स्पेस पावर की बात जब हम पैराग्राफ्स के लिए पढ़ रहे थे, इट केम समवेयर, इफ यू रिमेम्बर. C paragraph. C, ma'am. सी में आया था एशिया Third will become a line. world space power. Third line. Third line. ये आया ना, तो आप इसके आसपास इसको आपको इसका आंसर मिलेगा. ठीक है. Yes, तो ma'am. यहाँ पे है the rapid expansion has led many expansion किस चीज की? There has been a dramatic growth in space activities in Asia, both in the utilization of space-based services and the production of satellites and launchers. This rapid expansion has led many commentators and analysts to predict that Asia will become a world space power. Okay, अब यहाँ से देखो कोई आंसर जच रहा है आपको? Because C. हाँ, Rapid लिखो, expansion rapid of expansion.
तो आपको Yes, सी ma'am. मिल जाएगा, और आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कहाँ जाना है, तो मे बी इट विल सेव 1.5 मिनट नहीं लगेगा, Half. आधे या 1 मिनट हम्म। के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. अगला है डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इन एशियन कंट्रीज मे बी लिमिटेड। तो वो लिमिटेड क्यों होंगी? आप वैसे इसी पैरे में सेम पैराग्राफ में लास्ट 6 लाइन मोर ओवर के आगे से। इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन टेक्निकल फैक्टर्स, हाँ हाँ Yes, ma'am. यही वाला है ना, वहां पे हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, नॉन टेक्निकल फैक्टर्स की बात हुई है यहाँ पे। many non-technical factors such as economics, Such as politics, culture, economics, इनकी pol- वजह से। तो ये भी वहीं से आपको आंसर मिल गया, और इसमें भी आपका 1.5 मिनट नहीं जाएगा, बचेगा। तो आप पैराग्राफ हेडिंग्स में अगर ज्यादा टाइम लग गया, तो अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ के करा और टाइम ज्यादा लगा है, तो आपको बाकी क्वेश्चंस में आंसर्स में टाइम बच जाएगा, डोंट वरी। अगला जो है क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ फोकस इन एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका आंसर रिमोट सेंसिंग का आप कीवर्ड ढूंढ लो, कहाँ पे है? ई पैराग्राफ। ई हमने वैसे पढ़ा नहीं था ना, पहले छोड़ दिया था। इसमें रिमोट सेंसिंग है। मैम 4th लाइन। हाँ, remote sensing equipped with instruments to take photo. Thus the space application that has attracted the most attention in this region is remote sensing. Okay, पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैम फर्स्ट Asia and फर्स्ट लाइन ही Southeast Asia in बोल। particular suffer from a long list of recurrent large-scale environmental problems, including storms and flooding, forest fires and deforestation, and crop failures. एक मिनट, ये phone. Okay, crop failures. Thus, the space application that has attracted the most attention in this region is remote sensing. Remote sensing satellite equipped with instruments to take photographs of the ground at different wavelengths provide essential information for natural resource accounting. Okay, let us see. कौन सा आंसर जच रहा है आपको? हमने पढ़ा है इसके बारे में। रिमोट सेंसिंग has received a lot of focus क्योंकि Natural disasters को F है, because Yes, Asia is prone to many natural disasters. वहीं पे हमने पढ़ा है, यहाँ पे forest, First flooding, line, ये yes, सारे ma'am. natural disasters Second हैं। line. ठीक है। Yes, ma'am. Last question यहाँ पे है 36. Satellite manufacturing may become a very competitive industry in Asia. ये बहुत competitive industry बन जाएगी। Yes, ये कहाँ पे है इसका आंसर? F, ma'am. F पैराग्राफ में? Yes, ma'am. यस मैम। Why will it F. become? Why will it become? इसका आंसर देखो। मैम थर्ड लाइन से ही हो जाएगा। एशियन कंट्रीज आर वे टू डेवलप Develop low cost टेक्नोलॉजी हाँ, रैपिडली हाँ, हाँ, एस्टैब्लिश। हाँ, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? यहाँ पे देखो। easily Accessible commercial satellite commercial commercial ठीक है, that is it. Okay. Yes, Yes, अब हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने हैं। अब इनमें भी आपका टाइम बचेगा। Ancient China had already deployed rockets for military purpose as early as 500 BC. हमने पढ़ा पहले पैरे में। ट्रू। हाँ, ट्रू है, हमने पढ़ा था ना ये। टाइम बचा ना इसको करने में। यहाँ पे आपने 500 BC चाइना। ठीक है, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखो। स्पेस टेक्नोलॉजी has enhanced literacy in Asia. अब आपको ना ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लिटरेसी की कहीं बात हुई है और कहीं नहीं हुई। इसने एनहांस नहीं किया लिटरेसी, नॉट not given. रिमोट सैटेलाइट इमेजिंग कैन हेल्प इन नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन एंड Yes, ma'am. Yes, अभी पढ़ा है मैम, पढ़ा अभी अभी, तो ये ट्रू है। It is unlikely that Asia will be able to compete in satellite manufacturing. हमने अभी पढ़ा है कि करेगा, it will become Yes, a करेगा। तो false है। Unlikely है। ठीक है, Yes, अब ma'am. आप देखो, अगर आपने पैराग्राफ हेडिंग्स में 7:30 की जगह 10:30 मिनट भी लगा दिए ना, तो भी आपका पूरा पैसेज 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जब पैराग्राफ हेडिंग्स होती है ना, उनको इत्मीनान से कर लो, बाकी आंसर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, और बस पैनिक नहीं करना है। ठीक है। Yes, आज ma'am. शाम को ना we'll be discussing a few miscellaneous essays. Okay? Miscellaneous essays हैं जो मैं किसी कैटेगरी में नहीं डाल पाई हूँ। ठीक है। Yes, ma'am. So they will be very helpful to you. We'll be starting the class at sharp 9, right?
So see you then. Bye. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.